According to me, uh, creativity, you can define creativity as like the desire to express gives birth to creativity. That's what I feel. अगर हमें कुछ भी एक्सप्रेस करना होता है, हम जैसे स्कूल में हैं और हमें मतलब बोल रहे हैं कि स्कूल नहीं जाना है आज, तो हम एक्टिंग करने लगते हैं कि यार पेट दुख रहा है, बचपन में बच्चे करते हैं ना ऐसा, या फिर अगर कुछ शीशा टूट गया खेलते हुए हमसे किसी घर का, और हम एकदम घर जाके एकदम अच्छे से चुपचाप जाके बैठ जाते हैं, तो हम एकदम से क्रिएटिव हो जाते हैं। हमें कुछ भी बहाना देना रहता है तो हम अलग अलग चीजें सोचने लगते हैं। So where does it come from? It comes from a desire to, it's come from a basic desire to express. जहाँ जहाँ हमें एक्सप्रेस करना होता है तो इंसान उसके लिए क्रिएटिव हो जाता है कि यार मैं इसे कैसे बताऊं, या और कैसे बता सकता हूँ, या और कैसे बता सकता हूँ। और otherwise like maybe I feel being creative is being honest with what you feel, and it's being honest to what you believe in. Maybe like if you call yourself creative and while you don't believe in yourself, so you might not have a good pillow to sleep on. Like you won't be satisfied with your own work, or maybe you won't be satisfied with what you believe. So maybe being honest, that's what we learn as actors. That's what we like. I try to personally put in my music, that if I'm honest with my content, if I'm honest with my art, so so in the ways I can explore my creativity would be far more open and far more like I'll have a wider range to express, because if I'm honest with my work, I'll be more confident about it. So my thought process would also be more confident about it. So that's how I see creativity. Like it's the basic. It's very simple. It just comes from the desire to express, and it just ends with it. Hey everyone, welcome to the Closet Writer Chronicles. I'm your host Sangeeta, a.k.a. the Moody Marshmallow. You just heard our guest for today, Shubh Tripathi. Shubh is a rapper who goes by the stage name Bawal. He is also a writer and actor and has worked with the Indore Zoo, particularly the Aviary and the Animal Rehabilitation and Protection Front. Shubh has composed a number of songs and has been featured by Brown Girl magazine. We chat about his journey into rap and how Bawal was born. We also talk about his creative influences and his deep love for nature. So welcome back to the Closet Writer Chronicles, everyone. This week, I have with me Shubh Tripathi, a.k.a. Bawal in the house. Welcome to the show, Shubh. I'm so happy we're getting to record finally after so long. Hi, thanks. Yep. So I think first off, like shuru se shuru karte hai. What is your earliest memory of writing, and when did you realize that this is something you enjoy doing? So there was a time while in my school, so there was a girl I really used to like, and she came to our class, and the guy who I used to sit with used to write poetry. So one of his he wrote one of his poems on a page and it fell off, and she picked it up and she asked me that who wrote it. So okay. I was like, is it nice? So she was like, yes, but who wrote it? So I was like, then I wrote it. Wow. And after then what I did was I tried to I tried to write poetries after that. So that's one of my first memories of writing. But then afterwards I started back in 2019 when wow, okay, for myself. Yeah. Okay. No, that's really cool. That's really interesting because each time people come on the show and there's always I started writing in, English class, or, I read a book or something. So it's really interesting that, in your story, it's a very real life incident ki, you yes. You wanted to impress someone. So which is, I think is very relatable because I'm sure ऐसे काफी लोग होंगे जो रिलेट कर पाएंगे कि हाँ मुझे भी किसी को इम्प्रेस करना है तो मैं भी लिख के देखती हूँ कि what happens. So I think that's great. But then having said that, you got into rap. I mean, you started writing poetry, but then you got into rap.
What has Mhm. that journey been like? Like, how did you get into rap, and how did that start, and how was Bawal born? What is the origin story? See, actually, I never used to like hear rap songs, and मुझे पता भी नहीं था rap क्या होता है. But हाँ. while I was working in radio, so one day I got to interview Spitfire. So Hmm. he is he's a good friend of mine as well, and I went there. I met him. Hmm. I asked my friend कि यार मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ, मुझे पता नहीं कौन आ रहा है. He's like he's a good rapper and he's worked with Ranveer Singh. You should go. So Wow. I just went. I left my college and I went there. And I got to meet him. Like मैंने उनके गाने सुने, उनके lyrics मतलब मैंने Hmm. फिर पढ़ी ही अलग से on my way. So I was like कि Hmm. wow, this person writes like real good stuff. और फिर मैं Hmm. उनसे मिला और मैंने Hmm. उनको बोला कि नितिन भाई मैं भी लिखता हूँ, मैं आपको सुनाता हूँ. तो उन्होंने बोला कि हाँ बताओ क्या लिखते हो ऐसा करके. So I just like performed my poetry in front of him and he was like wait, let's put on a beat. So he opened YouTube and he like just put on an internet beat and he was like कि 1 2 3 4 like beat पकड़ और इस पे Hmm. poetry कर. So I was like कि हाँ ये तो easy है. तो he was like बस record करके डाल दे, this is rap. So I was like कि ठीक है. मतलब ओके कि हाँ. मतलब मुझे ऐसा लगा कि ये तो सब अभी बस हो गया क्योंकि आपने बोला तो मैंने ऐसा बोल दिया. बट Hmm. डाल देना एंड आई वाज नॉट वेरी कॉन्फिडेंट एट दैट टाइम क्योंकि यार रैप वगैरह मुझे पता ही नहीं है क्या है. उसके बाद मैं कर रहा हूँ और ऊपर से देन लाइक रैपर्स गाते आते हैं तो आई वाज लाइक कि यार मैं कैसे गा सकता हूँ ऐसा करके. सब Hmm. ऑनेस्टली मैं सोच रहा था कि मैं कैसे गाऊंगा यार, मैंने तो कभी इतना कुछ करा नहीं है. पोएट्री अलग बात है. पर हाँ. फिर मैंने सोचा कि यार ठीक है वो बोल रहे हैं तो करके तो देखते हैं. तो फिर मेरे मेरे पास बहुत सारे ऐसे एक्सक्यूजेस थे कि मैं रिकॉर्ड कैसे करूंगा और ये वो. Hmm. तो उन्होंने बताया कि यार हम तो घर पे थे तो हम तो कंबल ओढ़ के रिकॉर्ड कर लेते थे फोन से ही. तो देयर नो एक्सक्यूजेस. आई वाज लाइक कि हाँ यार लाइक अगर कर सकते हैं तो करना चाहिए. एंड फ्रॉम देन Hmm. लाइक वहां से तो जर्नी शुरू हुई. एंड देयर वाज जस्ट वन डे मैं मेरे दोस्तों के साथ उनके घर पे बैठा था और मैं सोच रहा था कि यार हम लोग सब मिलके सोच रहे थे कि मेरा स्टेज नेम क्या होना चाहिए. और हाँ. सब अलग अलग सजेशंस दे रहे थे और बहुत देर तक कुछ समझ ही नहीं आ रहा था. वी वर नॉट लाइक फाइनलाइजिंग समथिंग. और उसके Yeah. बाद फिर एकदम से मेरे दिमाग में आया बवाल. सो आई वाज लाइक कि आई वांट टू गो विद बवाल. एंड फिर मना भी किए लोग तो मैंने सुना ही नहीं. मेरे को बस हो गया था कि यही है. मतलब हाँ. ये मैं बोला कि मैं तुमको सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, ये मैं बता रहा हूँ कि यही रहेगा. क्योंकि हाँ. बवाल हैज बीन समथिंग व्हिच हैज बीन विद मी सिंस स्टार्ट. मैं जा भी गया हूँ, मैं मेरे स्कूल गया Hmm. हूँ, मैं मेरे कोचिंग गया हूँ. सब जगह Hmm. बवाल ही मचाया है. सब जगह से भगा देते थे मेरे को. स्कूल से सस्पेंड कर देते थे, कोचिंग से बाहर निकाल देते थे. सब जगह बवाल ही मचाया है. तो आई थॉट कि आगे भी यही मचाना है. Yeah, because Bawal is a really cool name, honestly, when you think about it. Because I know Mm-hmm. all these like rappers, especially in India, the stage name is like a huge thing because it kind of, it's the first representation of what the artist is, right? And I think Bawal is just Mm-hmm. such a cool name. And even, personally, when I listen to your music, मुझे समझ में आता है कि आपने बवाल क्यों रखा. Because, वो नहीं, because, and I mean this in a very good way. Because, Mm-hmm. आपके लिरिक्स भी ऐसे हैं जो आप किस बात को कहाँ से जोड़ लेते हो और वो एक इम्पैक्ट होता है जो आई थिंक इट्स नॉट वेरी इजी फॉर मोस्ट आर्टिस्ट टू डू. एंड आई थिंक यू मैनेज टू डू दैट fairly well. And I don't know if it's because you have been writing for a while and hence it comes from that also. And I think something I have to mention is your lyrics are just so on point. Sahasradhara, as I always say, is my favorite track of yours. I remember when it first Mm-hmm. came out, I was just listening to it on loop. I think the lyrics are just like amazing and the beat is also just something else. But having said that, then when you're composing music, do you first look at lyrics and then look at tune, or do you look at tune and then lyrics? Yeah, is it interchangeable for you? Like कैसे करते हो आप compose? नो लाइक मेरा ऐसा है कि मैं दोनों चीजें एक साथ आती है. मतलब इट्स अच्छा. नॉट लाइक कि पहले लिरिक्स लिख लिया या फिर मतलब पहले म्यूजिक सोच लिया. बट इट हैपेंस ईदर वेज एज वेल. You never know what's the process. Like there's no fixed process. It just comes how it wants to come. ऐसे गाने हैं जो जिनके लिरिक्स मैंने लिख लिए हैं, देन आई फिर 5-6 महीने तक मैंने छुआ ही नहीं उन्हें. एंड देन लाइक सहस्त्रधारा वाज वन ऑफ देम. सहस्त्रधारा
को मैंने लिखा था, बहुत थोड़ा सा कंप्लीट किया था, and then I left it for like around 7 months and I never worked upon it. And then I went to Jaideep bhai and like who produced the song, Jaideep Hora, like he works good, like he has a very good music sense and he works like great. So I went to him and I was like कि यार जयदीप भाई ये 5-6 गाने बताओ क्या बनाना चाहिए. तो he was like यार सहस्त्रधारा बना. पर मैंने बोला यार वो तो इनकम्प्लीट है और मुझे लगा था कि सहस्त्रधारा नहीं बनाऊंगा मैं. तो he was like कि नहीं यार ये बहुत बढ़िया लग रहा है, यू शुड गो अहेड विद इट. फिर उसके नेक्स्ट 2 दिन में मैंने पूरा सहस्त्रधारा लिख लिया था. एंड देन वी वर लाइक कि ओके वी आर गुड टू गो विद इट. और फिर मतलब जब आप लिखते हो ना, सो यू नो कि हाउ यू वांट टू प्रेजेंट इट. लाइक इट जस्ट मतलब अगर मैं आपसे कुछ अभी बात कह रहा हूँ, जैसे मैंने ये पूरा बोला, तो मुझे पता है कि मुझे हर लाइन कैसे बोलनी है. या फिर एटलीस्ट आई गिव इट अ थॉट. अगर मैं 2 मिनट सोचूंगा अभी कि यार मैं कैसे चाहता हूँ कि ये जाए, तो दैट मेक्स योर फ्लो, दैट मेक्स योर composition, and that's the music, like your feelings, जैसा हम फील करते हैं उस गाने को लेकर के, वैसे इंस्ट्रूमेंट्स हम डालते हैं, वैसा म्यूजिक हमें अपील करता है. तो वो कहीं ना कहीं से पूरा परफेक्ट कॉम्पोजिशन बन ही जाता है. No, but that's really interesting. But then I just want to ask, you know, since you've been writing poetry, have there been instances where there's stuff you've already written beforehand and before you got introduced to rap, you've converted that to rap, or you've thought of converting it to rap? Yes, like बहुत सारे मतलब काफी सारी जगह पर ऐसा हुआ है कि I've taken like some of the lyrics from my poetries, like they have been inspired from the poetries, क्योंकि मैं poetries भी पढ़ता हूँ. I go back to them when I'm reading them again, so I get some new thoughts. Maybe the thoughts are linked to the poetries or maybe they're not. or maybe it happens कि वही कुछ 4 लाइनें अच्छी लग रही हैं but उनको किसी और तरह से भी लिखा जा सकता है जो और बेहतर रहे. So I don't like repeating stuff, but then अगर मतलब किसी बात को बेहतर तरीके से बोला जा सकता है तो फिर उसमें क्या बुरा है, कुछ नया अगर दे सकते हो आप. Yeah, so then like, because I know you've done like the reason I asked that question is because I know you've done like poetry pieces on like other YouTube channels where you've written and you've like recited or performed like spoken word. Would you say like maybe something you've performed spoken word wise, you'll ever see it, you know, converting that into rap? Like I've done it in one form, now I don't want to do it in another form, let me do something completely different. Is that something you're open to? And I'm asking this again because there's that big debate among creators today ki yaar, you can't do one form of content in different ways, you can only stick to it in one way. So I just want to know what your take is on that. यार मैं तो इस पे पूरा अलग ही सोचता हूँ. मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो इन दी एंड है तो अपना ही ना. लाइक अगर मैंने कुछ लिखा है तो है तो मेरा ही. अब उसको मैं ऐसे अगर मैं उसको 6 तरह से प्रेजेंट कर सकता हूँ और 6 लाइक नोटिसेबली डिफरेंट तरीके होने चाहिए वो. मतलब ऐसा नहीं कि स्पोकन वर्ड में थोड़ा धीरे बोला है तो रैप में थोड़ा फास्ट बोल दिया है और वो सिमिलर साउंड कर रहा है. बट इफ आई कैन मेक थिंग्स व्हिच आर कंप्लीटली डिफरेंट आउट ऑफ सेम कंटेंट एंड सेम लिरिक्स, then it's a win for me as well कि मेरा परसेप्शन बड़ा होगा ना उससे सोचने का, उसी चीज को लेकर के कि यार मैं इसको ऐसे भी बता सकता हूँ, ऐसे भी बता सकता हूँ. So I'm not done it yet, but then it's not like that कि अगर मुझे मौका मिलेगा या मुझे थॉट आएगा तो मैं नहीं करूंगा. I've thought कि मेरी कुछ पोएट्री जैसे पता नहीं like was a poetry of mine जो मैंने मतलब CAB NRC का जो मूवमेंट हुआ था उस टाइम पे जब बिल्स पास हो गए थे तो उस टाइम मैंने लिखी थी. So I really think कि I'll convert it into some political rap someday, but then I'll not complete it, like take it as a whole. The paragraphs or the lines I need, I'll be taking them. And like I don't know, उसमें कोई बुरी बात है यार, अपना ही तो content है, so why can't you use it? And if you are providing good content तो वो कितने भी तरह से आए. मतलब अगर आप ऐसे तो वो ऐसा हो जाएगा कि फिर मतलब मैंगो है तो मैंने मैंगो से आम का रस बना लिया तो फिर मैं मतलब मैंगो से आम पापड़ नहीं बना सकता. मतलब बहुत सारी चीजें बन सकती है ना. एक चीज की कितनी सारी डिशेस बना सकते हैं. No, that's a very interesting take. I actually love that, you know, comparison of aam and aam papad. That's actually because even I belong to that school of thought ki why can't you present one form of content in different ways if you can, which I think is really cool because it's different ways of sort of looking at it and interpreting it, right? But then, you know, talking about rap in, you know, India, I think it's especially like it's blown up. I think Gully Boy has been, I think, one of the points of like, you know, making it a lot more popular and I think a lot more recognized and visible in, I guess, in a more mainstream way today, if I had to like talk about it.
But having said that, you were obviously, I'm assuming, exposed to it way before Gully Boy came out, is my assumption. Yes. So, like, who influence, what are your influences in rap, but also like just in terms of your writing, who are your influences? Are there particular like writers or artists or even like films or books or anything that you've really been impacted by? What is the content that you really relate to, the kind of artists you relate to? See, the first person जिसका मैंने गाना सुना rap artist में, he was like जिसको मैंने मतलब थोड़ा साउंड माइंड से सुना, कि जिसमें मैंने लिरिक्स को एनालाइज किया, जिसमें मैंने म्यूजिक को एनालाइज किया. So he was Spitfire because he introduced me to this thing. And so I really liked his music because meaningful content हमेशा एक लिसनर को अट्रैक्ट करता है, हमेशा उसको अपील करता है. क्योंकि अगर आपके कंटेंट में मीनिंग है, अगर आप कुछ सही में कहना चाह रहे हो, अगर इट्स जस्ट लाइक कि अगर दो लोग आमने सामने बैठे हैं और मैं कुछ तो भी बोलने लग जाऊंगा, कोई भी वर्ड्स बिना ग्रामर के या बिना एक दूसरे से जिनका मतलब नहीं है और बोलूंगा, तो शायद सामने वाला मुझे 2 मिनट देखेगा और फिर अपना काम करने लग जाएगा कि ये क्या बोल रहा है. बट अगर वहीं मैं उसे एक प्रॉपर सेंटेंस में प्रॉपर एक्सप्रेशंस के साथ या फिर प्रॉपर एक पैटर्न में, एक अरेंजमेंट के साथ उसको बोलूंगा, तो उसको लगेगा कि हाँ यार ये कुछ बोलना चाह रहा है. तो he'll listen. तो वही मेरा शुरुआत था वहां से. एंड देन उसके बाद बहुत सारे लाइक राइटर्स हैं, और मतलब ऐसा कोई पर्टिकुलर फिर इन्फ्लुएंस नहीं है, क्योंकि वो मतलब ये लोग मुझे सुनना बहुत पसंद है. सो आई ट्राई टू कंज्यूम every piece of art I'm given. And see, I basically believe कि म्यूजिक में ना आपका कोई इन्फ्लुएंस नहीं हो सकता है. और मतलब क्योंकि आई बिलीव कि म्यूजिक ना इट्स जस्ट अ लॉक एंड की कॉन्सेप्ट. सो इफ you have the right key to a song, then you can unlock its full potential and you can vibe with it. There are people who vibe with some songs and they are like कि कुछ और बजा दोगे, they are like यार ये क्या बजा रहा है यार, ये we can't vibe with it, it's not good. But then there are people जो उस गाने पे वाइब करेंगे और तुम वो वाला बजा दोगे, तो they'll be like कि यार ये क्या बजा रहे हो तुम. So everybody has different set of keys. But I want to become a person who has every key. So no matter what song it is, if you can take in the good things, if you can take in the right meaning, and if you can like give उसको मतलब आर्ट के जैसे अगर सुनो एक बार, अच्छी चीजें सब जगह होती है यार. Yeah, that's true. तो वही. So I believe कि यार हर सब जगह से इंस्पिरेशन मिलता है. No, of course, and I completely agree with that. But yeah, I mean, then talking about rap, because I feel like any creative profession, especially I think South Asia and India, usually when you tell people that you're pursuing anything creative, I feel like you get some form of judgment in general. Uske upar se, I'm just thinking when you said that, oh, I want to do rap. like जो कि बहुत ही काफी, like I don't want to say niche, but it's still not, I guess, as recognized. I think now, okay, because of Gully Boy and stuff, it's like really come up, and NSYNC records and all. But I'm just curious कि जब आपने शायद पहली बार अपने पेरेंट्स को बोला होगा कि यार मुझे like फैमिली से कही होगी कि I want to rap, this is something I really want to do, I'm passionate about. What was the reaction you got from them, and what is the reaction I guess you get from people around you when you say that, hey, I'm a rapper? Like, are there any assumptions जो बहुत ही गलत फहमियां होते हैं, या like have you faced any of that? Yeah, a lot of them. Like my father, जब मैंने पापा को पहली बार बताया था कि पापा रैप करूंगा, तो उस टाइम गली बॉय मतलब आने में ही थी, और अदरवाइज लाइक मेरा पहला गाना हो गया था, एंड देन आई वाज जस्ट टॉकिंग टू हिम कि पापा रैप करना है ऐसा करके. तो ही वाज लाइक कि यार ये तो सिर्फ 10 साल चलेगा अभी, क्योंकि वो फिल्म आई है, और उसके बाद 10 साल बाद नो वन वुड बी लिसनिंग टू इट एनीमोर. सो आई वाज लाइक कि ठीक है ना, मतलब क्या फर्क पड़ता है अगर लोग नहीं सुन रहे. तो मुझे पसंद है, मैं बनाना चाहता हूँ. मैं ये थोड़ी पूछ रहा हूँ कि 10 साल बाद कोई सुनेगा या नहीं सुनेगा. मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैं बनाना चाहता हूँ म्यूजिक, और इस तरह से मैं म्यूजिक को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ. सो ही वाज लाइक कि ओके देन like have it your own way. So that's how it was. But then they have been really supportive because like they like my songs and they were like कि हाँ ठीक है, कर, अच्छा कर रहा है, सो कर रहा है तो पूरा मन से ही कर फिर. But then have you like faced anything like say from people around you, like okay, परिवार, like family is one thing, but then होते हैं ना कि लोगों से मिलते हैं और कभी कभार ऐसा होता है कि अरे तुम क्या करते हो, and then when you say rap, like have you ever faced a situation where someone has just
blatantly judged you or assumed something? See, so कभी एकदम स्पेसिफिक तो नहीं हुआ, मुझे ऐसा कुछ स्पेसिफिक तो याद नहीं आ रहा है, बट फिर भी अगर आप किसी को बोलते हो तो देयर आर ऑलवेज टू टाइप्स ऑफ पीपल. वन हु आर लाइक फ्रॉम लाइक व्हेन आई वाज इन मुंबई, so I was there and like I met people and I told them that I rap, so everybody was very welcoming because like they are the industry people and they are with the art and with the industry. So they were very welcoming ki nice yaar, wow, you're a rapper, cool, let's meet, let's connect sometime, like send me a profile, send me your songs maybe. और फिर अगर यहाँ देखो तो यहाँ पे अगर आप मतलब when I came back to Indore and फिर there मेरे मतलब बहुत सारे relatives हैं और फिर उनसे बात करो, so everybody like in the family is an engineer or like they are maximum of them are engineers. So and they're doing real good at their job. So like there's no one ki bol sake ki engineering is not a good thing to do, or maybe it's like मतलब इतना अच्छा कर रहे हैं लोग घर में इंजीनियरिंग में कि इंजीनियरिंग के अलावा कुछ है वो सोचने के लिए भी लोगों को मतलब टाइम लग जाता है कि उसके अलावा भी कुछ हो सकता है, क्योंकि सभी इतना एक्सेल कर रहे हैं तो सबको ऐसा लगता है फिर तो एक ही चीज है यार, एक ही चीज करना चाहिए, जब सभी इतना बढ़िया कर रहे हैं इसमें तो तुम भी यही करो. बट देन it has been hard for them as well. अभी भी मतलब they are very worried about what I'll do and how things will take shape. So I'm like कि यार वो तो मैं भी worried हूँ, but okay, if I stop like अगर बैठ के चिंता ही करने लगूंगा तो मैंने मतलब like मेरी नानी से मेरी एक बार बात हो रही थी and she was like कि यार मतलब थोड़ा फिक्र होती है कि like it's not something from which you can earn stable money, and maybe you should concentrate on some other things. So I was like कि यार नानी आप पता है आप फिक्र मत करो, फिक्र से टेंशन होती है, आप भरोसा रखो, तो भरोसा रखोगे तो होप मिलेगी और होप मिलेगी तो फिर बढ़िया अपन होप को बढ़िया बनाएंगे. So that's all I could have said, क्योंकि अब ये यार ये मैंने फ्यूचर नहीं देखा है. मुझे बस मेरा प्यार पता है मेरे आर्ट के लिए, मुझे मेरा लाइक डिवोशन पता है. So and okay यार I'm not just playing to win. It's like it's never, क्योंकि अभी आपको नहीं पता ना यार क्या होगा. But taking the risk is the bigger factor than winning or losing maybe. True. Yeah. Participate करना उसमें बड़ा है, तो I'm just here for the thrill, so I don't care like if I fail or if I like win as well. It doesn't matter, क्योंकि ये जो thrill है, जो process का thrill है, it's taking me to heights and it's showing me things I never could have seen अगर मैं engineer होता तो. So I'm happy with that. No, and that's important also. I think, I think there was this quote I read by Adam Grant where he basically said, happiness is not your achievements. Happiness is basically like a function of your daily activities, which should bring you joy. You can't anchor, your happiness through to an achievement or to success, which I thought was a very relevant point. तो जो आप कह रहे हैं, I can relate in that sense कि वो खुशी जरूरी है काम में, वरना there's really no point. That I agree. हाँ यार, क्योंकि एक ही तो लाइफ है, मतलब ऐसा तो है नहीं कि आपको बार बार टेक्स मिलते हैं. इट्स नॉट लाइक अ शूट कि यार ये टेक में आप रैपर बन गए, यार ये अच्छा नहीं लग रहा है यार, टेक 2 चलो इंजीनियर से ट्राई करते. एक ही लाइफ है यार. सो लाइक अगर इसमें भी सोचते ही रह गए कि ये करें या वो करें या फिर ये होगा कि नहीं होगा, इतना तो टाइम ही नहीं होता यार. ठीक है ना, जो लग रहा है लाइक जस्ट जो ट्रेन मिल रही है चढ़ जाओ यार उस पे, कहीं ना कहीं तो पहुंचोगे इसी. Yeah, that's actually a very good point for sure. But shifting gears a little bit, so I know you worked at the Indore Zoo and you've also worked with ARPF, which I found very fascinating. So talk to us about that experience, and is environmental science conservation, working with animals, something you're looking to work on the side, or is that just something you did? Like, I mean, why did you do it? Was that something you were looking at as a career prospect, or ki kya thought tha? Like I just said, जो ट्रेन मिल रही है चढ़ जाओ, कहीं ना कहीं पहुंचेंगे. So I was like making my documentary assignment for my college, and I was like making it in the zoo for the like feeding habits. I was like documenting the feeding habits of animals in Indore Zoo,
बिकॉज आई ऑलवेज वांटेड टू नो कि यार ये लोग खाते क्या होंगे। बचपन से जू जाता था, देखता था कितने सारे जानवर है, मुझे लगता था यार इन्हें खाने क्या देते होंगे। कुछ लोग बोलते थे कि यार नॉर्मली कुछ देते होंगे या फिर खराब खराब दे देते होंगे, क्योंकि किसको फर्क पड़ रहा है और किसको मालूम पड़ रहा है। सो आई वाज वेरी क्यूरियस कि यार देखो तो सही कि अगर मतलब यहाँ पे लायन है तो लायन को क्या खिलाते होंगे, लायन तो मीट खाता है, तो क्या फिर छोड़ देते होंगे एक मुर्गी वगैरह अंदर या जो भी जैसा भी। सो आई वाज वेरी क्यूरियस अबाउट इट, सो आई वेंट देयर एंड आई शॉट इट एंड देन आई गॉट टू नो कि कितना मतलब काम करता है एक जू, उसके एनिमल्स। समटाइम्स वी आर वेरी हार्श ऑन द जूज, लाइक उनके जू के कॉन्सेप्शन पे हम ना कभी कभार बहुत सख्त हो जाते हैं। हम ऐसा सोचते हैं कि यार नहीं यार वहां पे जानवरों को बांध दिया है और वहां पे बेकार तरह से रखते हैं जानवरों को, बेकार जगह, जू जू तो बेकार जगह, ऐसा सोचने लगते हैं लोग। बट ऐसा नहीं है यार, मैंने वहां जाके सीखा कि नहीं यार वो लोग भी काम करते हैं एंड मे बी इफ यू वांट, और जो वहां पे ध्यान रखी जाती हैं जानवरों के लिए ही। सो यू कांट जस्ट से कि यार ये खराब जगह है, क्योंकि पुराने जो जू के नॉर्म्स थे वगैरह थे वो सब खराब थे। इस वजह से जो नई पॉलिसीज हैं और जो नई है उनको नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता है। इफ यू गेट टू नो अबाउट देम यू विल बी लाइक कि हाँ यार जू काम तो कर रहे हैं अच्छा। सो गेटिंग बैक टू द पॉइंट कि मैं बस वो वहां पे मतलब डॉक्यूमेंट्री शूट किया एंड देन निहार सर जो जू के क्यूरेटर हैं, सो ही आस्क्ड मी कि मतलब do you want to work in the aviary and like do you want to like document for us for the zoo? So I was like why not, because I've been like बचपन से मुझे मतलब जानवरों को देखने का, उनके बारे में जानने का बहुत ज्यादा like शौक रहा है, क्योंकि मेरे नाना जी जो हैं he was a very passionate like animal lover। और बड़नगर there's a place मेरे मतलब मम्मी का और ये लोग का होम टाउन है, तो जैन से पास में ही है। So Barnagar में नाना जी when he used to go, so he could call all the monkeys from the trees। आप एक सेकंड के लिए जाओगे और आपको वहां कुछ नहीं दिखेगा, but then you stand there for 10 minutes and he'll do his call, or maybe how, I don't know how he did that, but then you'll see like around 100 or 200 monkeys around there in just 10 minutes। or maybe when you go into the water, वहां पे शिव घाट है, तो शिव घाट के पानी में when he goes, so I've seen fishes like coming into his mouth, like if he's having a laddu in his mouth, then the fishes were so comfortable that they jumped into his mouth, small fishes, and वो उसमें से खा के भी बाहर निकल जाती थी, उनके हाथ से भी खा लेती थी। So I've seen that, I've seen like thousands of parrots on our roof, क्योंकि नाना जी रोज खाना डालते थे, तो हजारों पैरट्स देखे हैं हमने, साथ में रोज आते थे छत पे। तो इस वजह से मैं बचपन से बहुत इंटरेस्टेड था और एवेरी गया तो वहां पे मैंने देखा, और इतना सुंदर बना है एवेरी। आई गेस पता है सबको, मतलब इंदौर के एवेरी तो जाना ही चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही सुंदर है। और that was the first time I was seeing something like that, कि यार खुले में बर्ड्स हैं और हाथ पे आ जाती हैं, and you can like talk to them, you can train them, you can see them at close। और कितने सुंदर कलर्स दिए हैं नेचर में, मतलब भगवान ने इतने सही सही कलर्स हैं, लाइक some of them are like blue, yellow, red, और इतने प्योर कलर्स है, पिंक, ग्रे। So I was very क्या बोलेंगे, मुझे तो वर्ड भी नहीं पता उसके लिए, मैं इतना ज्यादा अट्रैक्टेड था। अट्रैक्टेड इज अ वेरी वेरी शैलो वर्ड फॉर इट, बट आई वाज लाइक आई डोंट नो, मुझे बस ऐसा लगा कि नहीं यार अब तो यही करना है, अभी थोड़े टाइम तो कुछ और नहीं करना है, इसके साथ जो हो सकता है कर लेंगे, पर अभी तो यही करना है। So I was there for like around 3 months and then I learned about like body languages of birds and about their feeding habits and about how to train birds। I got to learn from there। So also like the person who designed the aviary, Mr. Nanda Kishore Reddy, so he has been a great mentor to me, he has taught many things। and my friends over there, Shweta, Aarti, Gaurav bhaiya, Shubham bhaiya, so they like ये लोग सब इतना एक अच्छा फैमिली बन गया था, and then we got to learn so much with each other। So like I felt वो 3 महीने खत्म होने के बाद मैंने सोचा, पता है लोग पहले सोचते हैं, मैंने 3 महीने खत्म होने के बाद सोचा कि क्या जाना सही था। So I was like कि हाँ यार सही था। पहले सोचता तो शायद मैं कुछ और जवाब देता खुद को कि नहीं यार तुझे अभी तेरा प्रायोरिटी ये नहीं है, तुझे गानों पर ध्यान देना चाहिए, या तुझे राइटिंग पर ध्यान देना चाहिए, या फिर तुझे कुछ भी करना चाहिए जो तेरी इंडस्ट्री का हो, मतलब बाहर जाके कुछ नहीं करना चाहिए। पर अगर मैं वो पहले सोच लेता ना, तो आज मैं इतना खुश नहीं होता कि मैंने वो 3 महीने मेरी लाइफ के वहां दिए। No, that's amazing. And but then do you see yourself working again, not say with the aviary, but just generally, I guess, with something related with nature, with animals or nature? Yeah. Do you see yourself doing something? Yes. I would love to. The day I get to work with them, the day I go to work with them.
No, so actually I was saying कि मैं बचपन से वेल्स को बहुत मतलब पसंद करता हूँ और मैं मतलब वेल्स के बारे में पढ़ता रहता हूँ. जब मैं बहुत छोटा था तब से I used to like watch documentaries on whales. I used to read. In fact, like I've got research papers on whales in my phone, and Wow. I used to read them. I used to read books on whales. So like that's one of my dream to see a whale in real. So that's why I've been like very fascinated with the like with nature and with animals around us. That's so cool, yeah. And I hope you get to actually do something with, nature and whales, because you sound so passionate about it. And I think it would just be amazing because यार आप music भी करते हो, nature के साथ भी काम करते हो. Do you think that you derive inspiration from nature for your music? Because I would assume you do, right? आपने कभी ऐसे, सोचा है कि हाँ, क्योंकि नेचर में कितना हम पता है बहुत ज्यादा ना. हमने बहुत सारी फिल्में देख ली हैं. हमने बहुत सारा बाहर का सिनेमा और बहुत सारी जगहों का सिनेमा कंज्यूम कर लिया है. तो हमें बस ऐसा लगता है ना कि उसमें फिल्म्स में या जो हमारी फैंटेसी जो हम दिखाते हैं, जैसे मार्वल वगैरह हम दिखाते हैं, तो उसमें बाहर के प्लैनेट से ये आए और एलियंस आए, तो जो अलग अलग कलर्स के हैं वो एलियंस आए, वैसा करके. तो उससे हमारा माइंड ना भर गया है. पर अगर आप 2 मिनट के लिए मेरे साथ बस 2 मिनट के लिए आज में आ जाओ और बस ये सोचो कि हम एक ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे 2 बार रात होती है. कभी सोचा था कि 2 बार रात होती है? सोचो एक बार, हम रात को सोते हैं, मतलब जैसे हर दिन 2 बार रात होती है, क्योंकि 12 बजे का नया दिन लगता है, तो 12 से सुबह 6 तक एक रात रहती है, फिर 6 से शाम के 7 तक एक दिन रहता है, और 7 बजे से 12 बजे तक वापस से रात होती है. कितनी सारी चीजें हैं. यहाँ पे बर्ड्स हैं, आप बर्ड्स के कलर्स देखो, एंड यू विल बी लाइक फैसिनेटेड बाय द बाय हाउ दे आर. एंड देयर आर बर्ड्स जो लकड़ियों को उठा के ड्रम्स बजाती हैं, और ताकि वो अपनी फीमेल को इम्प्रेस कर पाए. और इतनी सारी चीजें. और ये इन्हीं को अगर ध्यान से देखो ना, तो हमें लगेगा कि यार ये लोग एलियन क्रिएचर्स हैं यार, ये सब क्या है अपने साइड में. मतलब ऑब्वियसली अगर आप देखो कि यार आप एक धरती पे रहते हो जो कहीं गोल घूम रही है स्पेस में, देन यू गेट टू सी लाइक स्टार्स, यू हैव सम क्लाउड्स, एंड देयर आर ट्रीज कितने, मतलब ट्रीज लिविंग है. सोच रही हो कहीं भी बाहर जाओगी, इतने सारे ट्रीज दिखते हैं और ये सब जी रहे हैं. तो बट दे नेवर स्पीक, दे नेवर मूव. एंड देन देयर आर अस who never stop speaking, who never stop moving. Yeah. So how diverse is nature, and how diverse is the world we live? Like we are just ignoring some major facts, and we are not seeing it. We're not even acknowledging the beauty of like what we get. हमने कांच बनाया है, इंसानों ने कांच बनाया है. कांच अगर सोचो कांच कैसे बनाया होगा. नहीं मतलब मैंने कभी कांच बना के नहीं देखा, बट वो मेरे सामने कांच था, तो मैंने वो देख के बोला. बट कितनी सारी चीजें है ना यार, कितना मस्त है. सो बाहर का सोचना तो ठीक है, एक बात है ही, बट आपके आसपास जो है, अगर आप उसे ही एक्नॉलेज करो, आप 10 मिनट दे के अपने आसपास, कितनी सारी चीजें हैं. No, that's definitely, I hope you at some point, you not just musically, but I don't know, I can see you create something around nature. शायद music के through या शायद कुछ और आप create कर लो, but I don't know, I can definitely see you create something in that angle for sure. So now we're coming to the end of our interview, and we always end with these last two questions. So the first one is, what are your aspirations? What are you looking forward to in, the near or even distant future? Like, what are your plans for the future? See, maybe that's something we all are thinking about, and we all can assume, but nobody knows what will be happening. But then if things go according to me, so I'm planning go outside and pursue music, and maybe get to know more about like Western music cultures, and maybe I want to get introduced to different music styles and music cultures, because then maybe I think that I'll have more potential as a musician or as an artist to form music which can be like, which can give more to the people who are listening to my songs. Even if like I get to work with animals, that would be great. But then we can't be sure about anything. But then of course, whatever I'll be doing, I'll be learning something new, and maybe yes, like I'm currently working on 2 of my singles, and like we are making a video. We have recorded them. Oh wow! We are shooting the video this month. So maybe like I'm planning that by the end of this year we release like 4 to 5 songs more. Oh, that's amazing. Yes, so I'm working on it,
and things are like moving slowly, but then they are moving. So I can't wait to share my new music with you guys, because like I have so much to give. I've got so many songs which I want to like just put them out. Like if I had the rights, मैं तो आज ही रात को सारे के सारे schedule कर देता. But Yeah. there are a lot of work और बहुत सारी चीजें हैं जो figure out करनी है उनको डालने के पहले. So No, that's amazing. I can't wait to hear your music because, as I say, I love your songwriting. So I'm really excited to see, what kind of, music you're going to put out. So yeah, last question. What is a piece of advice or learning you'd like to share with people? It can be creative, professional, or something you've experienced in your personal life. And you just wish, people were more aware of ki, yaar, I wish people knew this in life. something I would like to share with people is that never stop. Like maybe never stop in the sense I don't mean कि बस जो भी कर रहे हो करते जाओ. But then like enjoy the process. Like enjoy whatever you are doing, and just don't do something because मतलब ये सोच के कि यार कि ये करने से क्या फायदा मिलेगा या ये करने से क्या होगा. Sometimes do things just because maybe they're attracting you or maybe you like them. And you never know आप कहाँ से क्या opportunity या फिर कहाँ से क्या चीज नहीं सीखते हो. Sometimes like just going for being there and not just to get something out of there. So maybe this is what I would like to share. And otherwise like एक ही लाइफ है. So इसमें जितना कुछ कर सकते हो, जितना कुछ देख सकते हो, जितनी कहानियां बना सकते हो, जितनी कहानियां इकट्ठी कर सकते हो, मेरे हिसाब से तो वो ही सबसे बड़ी वेल्थ है और वो ही सबसे बड़ा लाइक गोल या अचीवमेंट या फिर एक्सपीरियंस है. And on that beautiful note, we've come to the end of this episode. Thank you so much for being here, Shubh. Love talking to you. I'm so happy I could have you on the show, and I'm really excited for listeners, to listen to your story and the work you do. So yeah, thank you so much for being here. Thank you for inviting me. So that was my conversation with Shubh Tripathi, a.k.a. Bawal. This was a really interesting conversation, and I especially loved knowing more about India's growing rap scene. Closing this episode with a poem in Hindi written and narrated by Shubh. I hope you enjoyed the show, and I'll see you next week with a new guest and a new chronicle to share. It's our last episode for season 1, so be sure to tune in. Talk soon! Yes. So this is a poetry I recently wrote while I was coming to Bombay, and this basically is based on duality. So it's based on perception. So I won't get into explaining my piece. Maybe I'll read it to you and you'll get what it means. So तुम कौन हो? तुम कौन हो? जिस तुमको मैं जानता हूँ वो तो तुम नहीं हो. कौन? तुम और दूसरी तुम दिखने में एक से हो, सुनने में एक से हो, मुझे प्यार भी दोनों से एक सा है. शायद तुम एक ही हो, पर पता नहीं क्यों वो वाला तुम बहुत मेरा सा है. लेकिन तुम वो वाली तुम सी नहीं हो. वो सुनता है मुझे पर तुम नहीं, वो समझता है मुझको पर तुम नहीं, मैं जानता हूँ उसको वो तुम नहीं. मेरी कुछ चाहते हैं जिन्हें ना तुम पूरी करती हो ना वो, कुछ बातें हैं जिन्हें ना तुम पूरी करती हो ना वो, और फिर ये आंखें हैं जिनमें ना तुम पूरी रहती हो ना वो. कभी सोचता हूँ कि तुम्हारे लिए कुछ लिखूंगा तो वो ज्यादा किसके लिए होगा, उसके लिए जिसे मैं जानता हूँ या उसके लिए जिसे मैं चाहता हूँ. वो एक ख्वाब की शहर है तुम हकीकत सी हो, वो उम्मीद का चेहरा है तुम मुसीबत सी हो. वो पहला ही कश है तुम बुरी लत सी हो, वो बंद है दीवारों में तुम खुली छत की हो. तुम हो भी पर नहीं हो ये मुझे पता है, वो है भी या नहीं किसे पता है.